5, that is working with queries. So let's get started. I'm opening MS Access firstly. You can see MS Access 2007. I'm opening it. So first of all, I will create the database. So I'm clicking on blank database, and here name of database, suppose Mansi. Then create, and you can see database has been created. Now we have to create two tables. Then we will see how to create relationship and how to make queries, forms and reports, okay, which is given in this chapter. So firstly we will make the tables. Let's make the table. First table, that is student table. So here you can see table 1. We have to open the table in design view. So we will right click here and click on this design view. Write the name of the table, student. Click on OK. And here the table has been opened in design view. Here we will write the fields which we want. Roll number, suppose number type. Name, suppose test type. Then class, test type, and then city, that is also test type. Okay, now open it in datasheet view and write some things. Right click, then open it in datasheet view. It is saying you must save it, so click on yes, and it is saved. Now you have to write some data here. Class 8, suppose, city suppose Bareilly, and roll number 2, name suppose B, class 8, city Delhi, roll number 3, class 6, sorry, not name C, roll number 3, name C, class 7, and city Bareilly. Then roll number 4, name D, class 6, and city Delhi. So this table I have created with 4 records. Okay, 4 records I have entered here. Now I am creating another table. I will click on create, then click on the table option, and you can see new table has been created. Here we have to open it in design view. So I'm clicking on design view. I am writing the name of the table as marks and click on OK. Here we will write the marks of the student, suppose roll number, and this is number type, and marks, these are also number types. Yeah, no, don't take it marks, let us take it percentage. Okay, only 2 fields I have taken here, roll number and percentage. Now let's open it in datasheet view. So right click and click on datasheet view. So we have to save it, click on yes, and you can see it has been opened in datasheet view. Here I am writing the percentage of marks of these students. Roll number 2, suppose 60%, roll number 3, suppose 70%, and roll number 4, suppose 65%. Okay, so these 2 tables we have created here as we have created in the previous chapter also. Now in this chapter this is given how to set the relationship between these 2 tables. We have created these 2 tables, student table and marks table. Now we have to make relationship between these 2 tables so that we can make the query. Okay, so relationship कैसे बनाएंगे? We have to click on this database tool. Okay, and then click on this relationships. You will see show table dialog box will appear. You have to take the marks and click on add button, then student and click on add button. Both the tables
विल बी डिस्प्लेड हेयर. आप देख पा रहे होंगे दोनों टेबल्स का जो भी फील्ड्स हैं दे आर बीइंग डिस्प्लेड हेयर. नाउ वी वांट टू मेक द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू ना, सिंस दीज टू टेबल्स बिलोंग्स टू द स्टूडेंट्स. ठीक है, उन स्टूडेंट्स के नेम, सिटी, क्लास यहाँ लिखे हैं, उनके मार्क्स यहाँ लिखे हैं. वी हैव टू रिलेट देम. ठीक है, यहाँ भी रोल नंबर है, यहाँ भी रोल नंबर है. वी मस्ट हैव अ सेम फील्ड इन दीज टू. अगर हमें रिलेशनशिप बनानी है देन वी मस्ट हैव अ सेम फील्ड. यहाँ पे ये जो रोल नंबर है इसको हम यहाँ पे प्राइमरी की बोलेंगे, एंड इन दिस टेबल दिस विल बी कॉल्ड एज द फॉरेन की. सो व्हाट इज फॉरेन की? Foreign key is a field which relates the table with another table, and in another table it works as a primary key. Okay. सो रोल नंबर को रोल नंबर से हमें लिंक करना होगा. सो हाउ वी विल डू दैट? ये हमारी दोनों टेबल्स यहाँ पे शो हो गई. वी हैव टू ड्रैग दिस एंड वी हैव टू कीप इट ऑन दिस रोल नंबर. ठीक है, ड्रैग करेंगे. माउस का लेफ्ट वाला बटन मैंने दबा के रखा हुआ है और रोल नंबर को लेफ्ट से राइट पे मैंने ड्रैग कर दिया. नाउ यू कैन सी एड रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स हैज बीन ओपन्ड. यू हैव टू क्लिक ऑन, यहाँ रोल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है. यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट एंड रिलेशनशिप हैज बीन क्रिएटेड. इट इज बीइंग शोन हियर. ओके, रिलेशनशिप हमारी बन गई. दोनों टेबल्स हमारे